notes होना Okay. evaluate integral over c 3 sin z by z square minus pi square by 4 dz, where c is mod z is equal to pi, mod z is equal to pi by residue theorem, by residue theorem. So we have to apply residue theorem and we have to integrate this 3 sin z by pi square z square minus pi square. So Okay. our solution will be first of all, what is f of z? F of z 3 is sin z 3 sin z square by pi square by 4 dz. z square, no dz nahi, only f of z value we are taking. Pi square by 4 f of z, integral value nahi, Okay. integral ye to dz. This can also be written as 3 sin z, 3 sin z. Denominator looks like a square minus b square form. No? We write it as a minus b into a A plus plus b. B is pi by 2 here. Now, if you simplify a square minus b square, z into z square, and pi by 2 whole square is pi square by 4. So, therefore, how many poles are there? Therefore, z is equal to plus pi by 2, comma, minus pi by 2. minus pi by 2 are the poles, of f of z. The poles of, and both poles are simple poles because the power is 1. And Both lie inside also. yes, excellent. Both lies inside C. तो पहले अपन देख लेंगे C कैसा है. How the C looks like. Suppose our circle is what? What do you say? Circle. What is the center of the circle? 0. Yes, it is 0, 0. So this is 0, 0 is the center of this circle. And what about the radius? Radius is equals to pi. So definitely this part is what? Minus pi Minus by pi. 0. This is 0, pi. This is 0, minus pi. Now where these 2 points lies? Pi by 2 और pi by 2. ये plus pi by 2 suppose ये हो गया half वाला, ये हो गया suppose that is equal to pi by 2, and suppose this is that is equal to minus pi. Right now, so already we wrote both lies inside. So let me find out the value of this one. अच्छा इसकी value आप कैसा find out होगी? Integral over c 3 sin z by
z minus pi by 2 into z plus pi by 2 dz. So according to the residue theorem, it's a what? 2 pi I 2 pi I into residue residue at pi by 2. minus Correct? pi plus minus pi by 2 Residue at minus minus pi. pi by 2. थोड़े फैकल्टीज R1 प्लस R2 बोल के भी लिखते हैं, तो ये तो कोई कंपलसरी नहीं है, कौन सा भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी. Okay. Let us simplify this one. Residue at pi by 2. It means 2 pi I will be there as it is. 2 pi I into this work together. I want to do it. Residue at pi by 2 is limit z tends to pi by 2. Because it is a simple pole now, 1 by 3 n minus 1 factorial वाला formula use नहीं होता. Minus pi by 2 z minus pi by 2 into f of z plus limit z tends to minus pi by 2 z minus into minus plus pi by 2 into f of z again. To f of z again, this bracket will be closed. Now this is equal to 2 pi I into limit z tends to 0. Oh, sorry, not 0, it's a pi by 2. Limit z tends to pi by 2. Z minus pi by 2 into f of z. What's f of z here? What we have taken here, 3 sin z by z minus the pi by 2 simplified form. Z minus pi by 2 into plus z plus pi by 2. Into z plus pi. Cancel. Yes, plus limit z tends to minus pi by 2. This is z plus pi by 2. And again here in this case, f of z value is 3 sine z upon z minus pi by 2 into z plus pi by 2. Let me see how many terms are. We have to cancel here. It's what pi by 2 terms are cancelled. Now we have to apply the limits in both of the cases. 2 pi I into 1. If you substitute the limit 3 sine z value is pi by 2. In the denominator also, if you put pi by 2 plus pi by 2, pi by 2 plus it's a pi by 2. pi only, no? Yes. Half plus half is 1. Plus, यहाँ पे भी if you apply the limit as minus pi by 2, it becomes 3 sine minus pi by 2 sine minus pi by 2 by minus pi by 2 minus pi by 2 is minus pi here. This is equal to 2 pi I into sine pi by 2 is 90 degree, it is 1, 3 by pi, or sine of minus theta is minus sine theta, so it will be like that, minus 3 and minus outside, sine of minus theta minus sine theta hota, and pi by 2 value is 1 by minus pi. So this minus and this minus will be cancelling out. This is 2 pi I into, if you take the LCM, pi will be the LCM. 3 plus 3 is 6. So if you simplify, our answer is pi and pi also cancel, no? 12I. 12 is our final answer, and that is correct. So this is the way to find out the question where using the residue theorem. Then और एक आपके छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता, एक छोटा सा डेफिनेशन में याद आ गया इत्तेफाक से, तो लेट अस डू द क्वेश्चन. छोटा सा डेफिनेशन है, रेसिड्यू एट इंफिनिटी. कैसा फाइंड आउट क्वेश्चन एग्जाम में आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता, तो लेट मी डिस्कस दैट क्वेश्चन. खाली फार्मूला पूछ सकता है एग्जाम में आपको.
So it's called residue at infinity. Residue at infinity. So this is how the questions will come, and इसका formula है residue at infinity is equal to, the formula is limit z tends to infinity. This is minus z into f of z. अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा लिमिट रेसिड्यू एट इंफिनिटी तो आप बस आप ये फार्मूला लिखें. Z tends to infinity minus z into f of z. ठीक है ना. तो Okay, sir. एक मल्टीपल पोल का क्वेश्चन करेंगे. मल्टीपल पोल का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन है evaluate integral over c z cos z upon z minus pi by 2 all to the power of 3 dz, where c such that modulus of z minus 1 modulus of z minus 1 is equal to. This is the problem. So now you have to see how to solve this type of questions. Solution. Okay, first to tell me what is f of z here. Integral over c f of z dz से compare करें तो what is f of z value? Z cos z by z minus pi by 2 whole power whole 3. pi by 2 whole cube. So then what is the pole and how many, what's the order? Therefore z is equal to pi by 2 is a pole of order 3 of order 3. ठीक है. और ये what's this one? If you see this one, what's this circle? Center at Center is minus 1 comma 0. माइनस है तो प्लस लेते हैं अपन. yes रेडियस इज 1 यूनिट. radius ठीक है. is 1 unit. तो ये सर्कल कहाँ पे है और कैसा Pi by दिख रहा है वो 2. देखिए. Okay. तो वेयर इज दैट 1 comma 0? वेयर इज एक्चुअली x-axis. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन पहले तो बना लिए. ये तो एग्जैक्ट फिगर है. बट ये पाई बाय 2 नहीं आता ना सर इसमें फिर. हाँ मैं बता दो. पाई बाय 2 बोले तो अब क्या करना है इसको. पाई बाय 2 का मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जो है आपका ये 5 comma 0 1 यूनिट रेडियस ये माइनस 5 तो डेफिनेटली ये जो पाई बाय 2 वैल्यू है ये पाई बाय 2 वैल्यू इनसाइड द सर्किल सर यहाँ कहीं पे आती है. ठीक है. 1 comma 0 रेडियस के सर्किल है समझे. तो ये पाई बाय 2 जो है ना अंदर आता है. ये पाई बाय 2 यहाँ पे 90 डिग्री 45 डिग्री को अज्यूम करते हैं ना. ये पाई बाय 2 वैल्यू सेंटर के रेडियस के अंदर ही सर. ठीक है. ये फिगर तो एग्जैक्टली इसके हिसाब से सही नहीं है
एक्चुअली ऑरिजिन पे सेंटर नहीं है इसका, 1,0 पे। ठीक है, तो रहने दीजिए, आपको एग्जैक्ट फिगर बताने में आप टाइम चले जाता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू इंटीग्रल ओवर सी z cos z by z minus pi by 2 whole cube, z minus pi by 2 whole cube dz. How to find out this one is equal to 2 pi I into, एक ही रेसिड्यू है वो भी सर्कल के अंदर ही से, Yes. रेसिड्यू एट पाई बाई 2, बट इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 ऑर्डर है ना, तो 3. सॉल्विंग प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाता। दैट्स व्हाट लिमिट z टेंड्स टू पाई बाई 2, टेंड्स टू पाई। अच्छा, वहां पे इसके साथ में 3 minus 1 तो 2 फैक्टोरियल भी आ, दिस इज इक्वल टू 2 pi I into 1 by 3 minus 1 factorial limit z tends to pi by 2 z minus pi by 2, z minus pi by 2 भी नहीं, 3 बार डिफरेंशिएट किया, 3 बोलते कम, d square by dz square of z minus pi by 2 whole to the power of 3 into f of z. तो 3 minus 1 कितना? 2. 2 2 factorial. factorial is cancelling with outside 2, तो अपने पास है खाली 2 pi I। अच्छा, एक और चीज इसमें आपको ये बताना है, देखिए ये जो पोल है मल्टीपल पोल है, मल्टीपल पोल में 2 पाई आई भी नहीं आता उसमें, 2 पाई आई नहीं है, खाली आपको रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। प्रीवियस क्लास में आप जाके वीडियो देखिए उसका, उसमें No. मल्टीपल पोल में 2 पाई आई नहीं है, देखिए रेसिड्यू एट पाई बाई 2 डायरेक्ट कर लिए तो उससे दिस इज इक्वल टू 1 by 3 minus 1 factorial m minus 1 factorial, okay ना, this is limit z tends to pi by 2, since the order is 3, so we'll take second order derivative, d square by dz square of z minus pi by 2 and its power is 3 into f of z into f of z. It's close. This is 1 by 3 minus 1 is 1 by 2. This is limit z tends to pi by 2, and here d square by dz square of z minus pi by 2 whole cube into f of z. F of z is z cos z upon z minus pi by 2 का होल क्यूब। ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाता, दो बार डेरिवेटिव करना है, 1 by 2 into limit z tends to pi by 2, you have to differentiate this term 2 times, तो एक d by dz अप्लाई करेंगे, एक को बाहर रखें और uv फार्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इज z and derivative of cos z is minus sin z plus cos z as it is into derivative of z with respect to z is 1. Close it. Let us apply one more. If you apply limit z tends to pi by 2, एक और बार करेंगे, इस टाइम माइनस को आउटसाइड रखेंगे, z आउटसाइड, sin z means cos z plus sin z as it is, and this inner function that's with respect to z is 1, cos z का minus sin z. क्लोज इट। ये माइनस से पूरों को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा minus z माइनस cos 1/2 लिमिट z टेंस टू पाई बाई 2 10 to pi by 2 माइनस z cos z, ये माइनस minus साइन z, ये भी sin माइनस साइन z, मतलब -2 minus 2 sin z. sin z. Now when apply the limit, wherever z is there, if you put pi by 2, cos pi by 2, cos pi by 2 is become 0, और sin pi by 2, sin 90 degrees 1. तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा when limit apply 1/2 into -2 only. So the answer is -1. That's it. Because cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1. So ये -2 और ये pi का 1/2 becomes answer is minus. Okay. तो एक क्वेश्चन में आपको और एक एक दे देता हूँ करने के लिए, उसके बाद में जो आपका थर्ड यूनिट है इवैल्यूएशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दैट वी कैन स्टार्ट राइट नाउ. Okay, sir. एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, उसका हिंट भी दे देता हूँ क्या करना है. evaluate integral over c z plus 1 by z cube minus 4z dz. This one, where c such that modulus of z plus 2 is equal to 3/. तो एक सर्कल है, इसका के सेंटर है -2, -0, minus 2, 0, -2, 0 radius 3 सेंटर है by 2. 3/2, मतलब 1.5 यूनिट रेडियस का एक सर्कल है. ठीक है ना. Okay. और इसके जो पोल्स है z, इसको और आप चाहे तो एक एक स्टेप थोड़ा सा मैं लिख के दे देता हूँ आपको. This can also be written as integral over c z plus 1 by, this is if you take z common, we are left with z square minus 4 dz. एक और स्टेप अगर आप इसका लिखे, इंटीग्रल ओवर c z plus 1 upon z is z only, a square minus b square form, we write it as a plus b into a minus, correct? Yes. Into dz. So we say that z is equal to 0, z is equal to 2 and -2 are the poles. और Equals सर्किल के अंदर कौन सा है, -2 वाला रहता था, आप चेक कर लीजिए. और इसका आंसर है, 1 by 2 minus 2 center. इसका आंसर है, आप इसको Radius सॉल्व is करने के बाद में okay. -πi/4 इसका आंसर. Okay. ठीक है ना, इसको आप ट्राई कर लीजिए. नाउ वी कैन मूव टू द दैट इवैल्यूएशन ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन बोलते हैं. कंटूर इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन कैसा रहता है, वी विल स्टार्ट दैट वन. Then right, तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है जिसको आपको सॉल्व करना है, उसका भी सॉल्यूशन जो है ना रेसिड्यू थ्योरम से ही आता है. तो कुछ क्वेश्चंस ले Okay. लेंगे, उसके टाइप को मैं डिस्कस कर देता हूँ. एक क्वेश्चन ले लेंगे, शो दैट इंटीग्रल ओवर 0 to 2 pi 1 by 5 plus 3 sin theta and d theta
we have to show that its answer is equal to pi by 2. Okay, let me simplify this question. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे भी लिमिट्स आइडेंटिफाई कर लेना पहले तो 0 to 2 पाई 0 to 2 0 पाई to 2 मतलब pi limit. कंफर्म सर्कल के लिमिट्स रखो, ठीक। Okay. और उसमें या तो साइन थीटा के टर्म्स इन्वॉल्व होते या कॉस थीटा के टर्म्स इन्वॉल्व, ठीक है। वन बाई फॉर्म है, न्यूमरेटर में भी कुछ साइन और कॉस के टर्म्स आ सकते हैं। तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, और हर एक को ऐसे ही कॉमनली करना है आपको। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1 बाई 5 plus 3 sin theta d theta. Now the procedure is put e power I theta is equal to z. अब बोलेंगे सर इसमें e पावर i थीटा है ही नहीं, मैं e पावर i थीटा z कैसे अज्यूम करेंगे। तो ये कंटोर इंटीग्रेशन बोलते हैं, टॉपिक जिसको पढ़ रहे हैं इसका नाम है कंटोर इंटीग्रेशन। कंटोर Okay. इंटीग्रेशन के हर टॉपिक में आपको e पावर i थीटा इज इक्वल टू z इज है सब्स्टिट्यूशन। अब इसके वैल्यूज को निकालेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट both sides with respect to theta, with respect to theta. That means differentiation of e power I theta with respect to theta becomes what? Inner function is I and this is d theta is equal to dz. Hope you understand this system, otherwise नहीं बोलता मैं और थोड़ा डिटेल में करता हूँ। Yes. करो कर दो करो sir. डिटेल में, ओके डिटेल में करता हूँ। डिटेल में करने का मतलब ऐसा है, डी बाई डी थीटा ऑफ e power I theta is equal to d by d theta of z. Now simple e power I theta का इंटीग्रेशन e power I का ix का e power 2x का e power 2x ही होता इंटू इनर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे होते आई बचेगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी थीटा इधर आ जाता इज इक्वल टू डी जेड, राइट। अपने को डी Yes. थीटा की वैल्यू चाहिए, देन डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड बाई क्या होना चाहिए, डी जेड बाई Yes. मल्टीपल टर्म डिनोमिनेटर में आ जाता आई इंटू ई पावर आई थीटा इज नथिंग बट जेड ओनली, Yes. राइट। उसके बाद में सब्सटीट्यूशन है साइन थीटा का, साइन थीटा को सब्सटीट्यूट करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए अपन हाइपरबोलिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, साइन एच एक्स का ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। हर हर एक क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं आप, वो मैं डायरेक्ट अब लिख Okay. के बता रहा हूँ आपको। ई पावर आई थीटा वैल्यू जेड ना, Yes sir. e power minus I theta is nothing but what is this becomes? It's a 1 by z Minus 1 by z. by 2i. Now if you take the LCM and simplify, z will be the LCM, that z will goes to the denominator 2zi, and if you simplify this one, it becomes like that, z square minus 1, correct है। Yes sir. Z square minus So 1 हाँ, by तो आपकी 2z. सब्सटीट्यूशन आ गई है साइन थीटा की वैल्यू को, साइन थीटा की वैल्यू का रिप्लेसमेंट मिल गया है z स्क्वायर माइनस 1 बाई 2i z। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ये पूरे वैल्यूज जो आपको मिल गए उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वैल्यू अपने को हमेशा से जरूरत पड़ने वाली है, ये साइन की वैल्यू हर एक इस टाइप के कंट्रोल इंटीग्रेशन में साइन वैल्यू हमेशा यही रहेगा, डी थीटा हमेशा यही रहेगा, और आपका सब्सटीट्यूशन हमेशा से यही रहेगा ई पावर आई थीटा। बस इन तीन चीजों को cos याद theta करना का है। खाली वो साइन चेंज कर कॉस देना थीटा सर. को क्या होता बोलते, यहाँ पे मैं एक अलग कलर से लिख देता हूँ, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ रही। cos थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा प्लस
e power minus I theta by 2 only. सिंप्लीफाई कर लिया आप तो z स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 z ही आता, आई नहीं रहता उससे, है ना? Yes, sir. चलिए कंटिन्यू करेंगे. So then if you substitute all these values, then our I becomes, I is equal to, अब ये जो मैं बोला अभी आपको e पावर आई थीटा का मीनिंग क्या है? e पावर आई थीटा का मतलब है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यूनिट सर्कल बोलने का मतलब. यहाँ पे अपन ये 0 to 2 पाई निकाल के डायरेक्ट c लिख दे सकते हैं. 1 by 5 plus 3 into, what's the value of sin theta? Can you tell me that? Z square Z square minus 1 by 1 by 2 ZI. 2 I Z, या 2 ZI भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी. इंटू डी थीटा का रिप्लेसमेंट आपके पास ऑलरेडी मिल गया, डी जेड बाई IZ. आई जेड. अब इसका एलसीएम ले लेके ऊपर भेजा दीजिए इसको. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी 1 by, if I am taking the LCM here in the denominator, 2 I Z is the LCM, 5 2 are 10 I Z plus it's what, 3 Z 3Z square square minus minus 3 into, here we have dz by IZ, dz by IZ, right? अब ये 2IZ will goes to the numerator, 2IZ will goes to the numerator, divided by, this is if you write in order now, it's 3Z square plus 10IZ plus 10IZ, और ये बच गया -3, और यहाँ पे है dz और यहाँ पे है IZ, है ना? तो what, IZ cancel, take 2 outside, इंटीग्रल ओवर c 1 by, यहाँ पे जो टर्म्स बच गए 3Z स्क्वायर प्लस 10IZ -3, उसके फैक्टर्स अगर आप ले लिए तो क्या हो सकते हैं फैक्टर्स? 3Z स्क्वायर, 10IZ को अपन क्या लिख सकते? 9IZ प्लस IZ -3 इंटू DZ. बराबर चल रहे ना अपन? Yes, sir. जी. Time 6 minutes. Now let us take the factors and finish this problem as soon as possible. This is 2 times इंटीग्रल ओवर c. इसके मैं फैक्टर्स ले लिया समझे, तो इसके फैक्टर्स मेरे को आ रहे हैं यहाँ पे z+3. आप थोड़ा एक स्टेप कम कर लीजिए, इसमें कर लीजिए सॉल्व. z+3 एंड 3Z प्लस आई आ रहे हैं इसके पॉसिबल फैक्टर्स. मैं ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि फैक्टर्स कैसा करेंगे आप. ये दिस इज dz. नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम्स अवर लाइक अवर प्रीवियस क्वेश्चन. आप देख सकते हैं f ऑफ z, ये अभी जो अभी तक यहाँ के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से कंपेयर करिए, ये इंटीग्रल ओवर c, ये फॉर्म में है ना अपने क्वेश्चन सब. अब आपके इसके Yes, पोल्स sir. आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो इसमें f ऑफ z की वैल्यू तो ये पूरी आ गई. Yes. So how many poles are there? 2 poles. Yeah. 3 So both are same. and minus I by 3. -3 and z is equal to minus I by 3 Minus I by 3. are the poles. Are the poles. And अब कौन से अंदर है कौन से बाहर है वो कैसे बोल सकते हैं आप? यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल. Yes, sir. यूनिट सर्किल में क्या हो सकते हैं? 1 minus I by 3 अंदर आता, -3 बाहर आता ना. आर द पोल्स. एंड z is equal to imaginary axis पे -1/3 अंदर आता ना. Yes, sir. minus I by 3 lies inside C, inside C. So by residue theorem, by residue theorem, by residue theorem, this is, we have 2 already outside. इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं आप? 2 pi I into
रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू माइनस आई बाई थ्री। ऐसे करते हैं ना, Yes, ऐसे sir. करते हैं ना जी। नाउ लेट अस डू इट एंड फिनिश दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कर देंगे, खत्म हो जाता। सो देन अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये टू टू जा फोर पाई आई, दिस इज फोर पाई आई, फोर पाई आई। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बोले, लिमिट z टेंस टू माइनस आई बाई थ्री, z टेंस टू माइनस आई बाई थ्री, z माइनस इंटू माइनस प्लस आई बाई थ्री, ओके, इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास ये है ना, वन बाई दिस वन, जेड प्लस थ्री इंटू थ्री जेड प्लस आई, थ्री जेड प्लस आई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपन, इट्स फोर पाई आई, फोर पाई आई, इसको थ्री एलसीएम ले लीजिए, लिमिट z टेंस टू माइनस आई बाई थ्री, Hmm. इसको थ्री एलसीएम लिए तो थ्री जेड प्लस आई बाई थ्री इंटू वन बाई जेड प्लस थ्री इंटू थ्री जेड प्लस आई, थ्री जेड प्लस आई विथ दिस कैंसिल, वन बाई थ्री आउटसाइड, इट्स फोर पाई बाई थ्री, ये आउटसाइड हो गया। और लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ भी जेड है वहां पे लिखना है आपको, माइनस आई बाई थ्री प्लस थ्री। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, इट्स फोर पाई आई बाई थ्री। इसका सिंप्लीफिकेशन आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो कर लीजिए आप, इसको हो जाता है ये थ्री, इसका एलसीएम हो जाएगा, थ्री एलसीएम होके थ्री ऊपर चले गया तो ये थ्री ऊपर चल जाता, ये थ्री थ्री का नाइन माइनस होता, ये हो गया एट आई, ये आई से ये आई कैंसिल, फोर वन जा फोर टू जा कैंसिल, थ्री से ये थ्री कैंसिल, आंसर आ गया फाइव एट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आंसर फाइव टू लिखा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है ना। Yes. एक बार इस जरा यहाँ से बाहर रेसिड्यू थ्योरम बोल के है ना, नीचे, जी। नीचे और उससे नीचे, उसके नीचे हम्म। ये लास्ट लाइन है, देखिए वहां से एक बार जल्दी एक बार बोल दीजिए जैसे ये मुझे। क्या है बोलते, टू टाइम्स, ये टू इसमें का है, ये टू हाँ, इसमें का है, टू पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज। रेसिड्यू। उसमें हाँ, क्या है, z इज इक्वल टू माइनस थ्री का जो पोल है वो सर्कल के बाहर चले जाए, वन यूनिट हाँ, रेडियस का सर्कल है तो आई बाई थ्री पे ही करना है। तो लिमिट z ओके, टेंस टू ये फोर टू टू जा फोर पाई आई, ये मल्टीप्लाई हो गया, z माइनस आई बाई थ्री, जेड प्लस आई बाई थ्री इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू। इसको ओके, सिंप्लीफाई, एफ ऑफ थ्री जेड की एलसीएम ले वैल्यू वो लेंगे, लेनी है अपन। थ्री जेड प्लस आई बाई थ्री, यहाँ से इसको एलसीएम लेके थ्री को बाहर निकाल देंगे, जेड प्लस थ्री, हम्म, थ्री जेड प्लस आई, थ्री जेड प्लस आई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जहाँ जहाँ भी जेड है वहां पे आप वैल्यू आई बाई सब्स्टिट्यूट थ्री कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सिंपलीफाई कर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। थ्री प्लस आई है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी थ्री प्लस आई आना है, और यहाँ पे भी थ्री प्लस आई आना है। आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, थ्री प्लस आई है, ये भी आई है, ठीक है। तो आप